Question number 66, Rabo Limited. You should assume that today's date is first of December 2025. ठीक है ना? Let's start with this. You should assume that ठीक है. In relation to Rabo Limited sale of freehold factory, calculate the after tax proceeds. The after tax proceeds हमें calculate करने हैं. And how the base cost of the factory is calculated. You should ignore Rabo Limited's capital acquisition and trading losses for this part of the question. ठीक है, बस normal basic calculation ही है. Let's do this then. ठीक है, हाँ. अभी उसने कुछ एडवाइस एडवाइस मांगी है. ठीक है. मोराडा एंड राबो लिमिटेड. मोराडा हैज ओन्ड 100% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स इन राबो लिमिटेड फॉर मेनी इयर्स. ठीक है. बोथ कंपनीज आर यूके टैक्स रेसिडेंट ट्रेडिंग कंपनीज. बोथ कंपनीज प्रिपेयर अकाउंट्स टू 31st of December. On 31st of October 2022, Morada entered into an agreement to sell all the ordinary shares in Rabo Limited to Nali, who is an uncredited individual. ठीक है, एक सेकंड ना. ठीक है. ठीक है. ठीक है. The sale of the shares will take place on. ठीक है. Rabo Limited will sell the freehold factory building on 1st of April 2026 for 3,95,000. Rabo Limited acquired this factory from Morada Limited only. अच्छा, okay. On 1st of September 2022 for its market value of 3,02,000. Okay. Morada Limited had acquired the factory on 1st of June 2020 for 2,66,000. The factory has always been used for trading purposes. ठीक है. तो ये सब चीजें कॉपी पेस्ट होंगी बहुत सारी. प्रोडक्ट प्रोसीज निकालना है. पर्टिकुलर्स आफ्टर टैक्स प्रोसीज निकाले. पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई कैसे निकालना है. ठीक है ना. सेल्स प्रोसीड्स. चलो भाई. 3,95,000. फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर. मार्केट वैल्यू ऑफ 3,02,000. एक सेकेंड. हाँ, बराबर किया है. ये कंपनी है ना. कंपनी है. दिस माइनस दिस. आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ये हो गए. अभी ए का ये मैंने किया है फर्स्ट वाला पार्टी अटेम्प्ट. ए का सेकेंड वाला दी. ऐसे चालू करेंगे. दी. अभी दी फ्री होल फैक्ट्री was transferred from Morada to ये सब करेंगे. ब्ला 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 ब्ला. नाउ as Rabo Limited. एक मिनट. as Rabo Limited had acquired the freehold factory building at no gains, no loss. The transaction. हाँ, देखिए. No gain, no loss. हाँ, all Rabo Limited had. नहीं यार, ऐसा भी नहीं लिख सकते ना. हाँ, ऐसे लिख देते हैं. There will be a degrouping charge applicable wherein the gains will be taxed if Rabo Limited applicable. एक मिनट. degrouping charge applicable where when Rabo Limited leaves the group or
sells the asset within 6 years from the transfer. And as we can see that copy paste enter into an agreement कि वो सारी सारी shares बेच रहा है वो सब. However, the gain from the अभी ये सब नहीं लिखता है. द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ राबो लिमिटेड विल बी एसएससी वगैरह वो सब अभी नहीं नहीं लिखना है. However, now comes the question, what will be the cost of acquisition. बराबर है. The cost of acquisition if the company or asset is sold within 6 years will be the market value at which it was transferred to Rabo Limited. हाँ, to Rabo Limited. Perfect. Thus, the cost is मतलब वो सब 2,66,000. ठीक है ना. तो ये सब जाना था अभी आगे. कैपिटल एक्विजिशन एंड ट्रेडिंग लॉसेस इस पर. हाँ ठीक है. Blah blah blah. Explain the maximum possible amount of Rabo Limited's trading loss for the year ending 31st December 2025, which can be transferred to Morada Limited. So first of all, we can see that Morada entered into an agreement to sell all of the ordinary shares in Rabo Limited to Nali on 31st of October 2025. Therefore, Therefore, the losses of only 10 months can be provided to Morada Limited. ठीक है ना. Therefore, the losses of only 10 months can be provided to मतलब Morada Limited. However, it will be the lower of. अभी हमें lower of करना है. Lower of what? Lower of the 10-month proportionate of the losses and the 10-month proportionate of the profits. So 72,000, 10% कितना proportionating the losses of RABO Limited of RABO Limited. 10% क्यों किया मैंने. 10 months करना था ना. सॉरी. 10/12. ए ए हाँ. परफेक्ट. Of the profits of Morada Limited 8,40,000 so lower of होगा. Lower of is 60,000 and that will be given. ठीक है ना. For the period. ये हो गया. Explain the tax consequences for Rabo Limited of using some or all of the losses itself and explain any potential issues associated with such a course of action. ठीक है ना. Explain the tax consequences of Rabo Limited. ये भाई this is itself and explain any potential issues associated with such a course of action. वो नहीं कर सकता. Rabo Limited cannot use all of the losses which has incurred in the current year because this will not be correct treatment accounting treatment. Or this will not be the correct treatment, tax treatment. As then यही वाला रीजन दे देंगे कि भाई कैसे उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका था and once he has come into contract you cannot ऐसा undo it वगैरह वगैरह. Losses should be transferred
एज पर दी प्रोपोर्शन ओनली। अभी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? टैक्स कॉन्सिक्वेंस तो अगर यही होंगे कि इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस टू एंड विल कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, यही सब होगा। विल नॉट बी एन एज एथिकल एडवाइजर। अभी वो एथिकल एडवाइजर वाली बोलने की जरूरत नहीं कि हमको एज एथिकल एडवाइजर्स क्या करना चाहिए। बट टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस और क्या होंगे? हाँ मतलब उसका ज्यादा प्रॉफिट क्लेम हो जाएगा तो फिर कम टैक्स पे होगा, ये हम बोल सकते हैं, है ना। लेस टैक्स वुड बी पेड इन केस ऑफ मोराडा लिमिटेड। ये या दैट थिंग वी कैन से। बाकी का मुझे पता नहीं, बाकी का चेक करते हैं अभी। 93,000 आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स हमें हमें बिल्कुल सही है। ये देखो परफेक्ट। Sale of the warehouse Rabo Limited original no-gain no-loss transaction such that two companies don't check. However, हाँ वो लोग, अरे हाँ no-gain no-loss में क्यों हुआ है? बिकॉज वो लोग 75% मतलब वो सब्सिडरी में आते हैं। ये लाइन हमने नहीं बोली, ये हम बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। राबो लिमिटेड मोराडा लिमिटेड groups with 6 years of the intra group transfer while is still owning the factory. A degrouping gain will arise. This will be calculated by treating Rabo Limited as having sold the factory for immediately reacquired it as a market value. Accordingly, Rabo Limited deemed to have acquired the factory on so for 3,02,000। तो फिर ये देखो, हमने इसका भी 3/12 किया, हमको 62, सॉरी मतलब वो 10/12 किया, हमको आया करस्पॉन्डिंग पीरियड एंडिंग राबो लिमिटेड ट्रेडिंग लॉस कैन बी सरेंडर्ड टू मोनाडा फॉर द रिलीफ अगेंस्ट इट्स टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर द करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग पीरियड। ऑल दो फिर वो सब हमने लिख दिया, अरेंजमेंट्स है, मतलब वो प्रपोर्शन करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब ठीक है। अब आते हैं टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग रिलीफ फॉर द ट्रेडिंग लॉसेज ओनली इन राबो। क्या? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं था। ओ अरे भाई, मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। मैं पढ़ा मैंने, लेकिन मैंने अच्छे से मतलब चीज को समझा ही नहीं। वो लोग पूछना चाहते हैं एक्सप्लेन द टैक्स कॉस्ट ऑफ राबो लिमिटेड ऑफ यूजिंग सम और ऑल ऑफ द लॉस इटसेल्फ एंड एक्सप्लेन एनी पोटेंशियल इश्यूज एसोसिएटेड विद सच कोर्स ऑफ एक्शन। ये बिल्कुल, अरे भाई मैंने ये ध्यान से पढ़ा ही नहीं एक्चुअली। तो इसके देखो 72,000 के लॉसेस हुए हैं एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख इन द फ्यूचर। तो अभी अगर ये बंदा तो ये क्वेश्चन है कि ये बंदा अपने लॉसेस अगर अपने साथ करता है सेट ऑफ तो क्या है। मुझे लगा अगर ये बंदा 10/12 से ज्यादा प्रॉफिट, सॉरी ज्यादा लॉसेस अगर देता है तो क्या होगा। सॉरी सॉरी माय बैड। ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि इटसेल्फ है ना, मैंने ये वर्ड ध्यान ध्यान नहीं दिया इस वर्ड पे। इटसेल्फ अगर कोई उसके साथ करता है लॉसेस तो फिर मतलब वो सेटअप तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो उसको वेट करना पड़ेगा। इट विल बी अ 1 year लॉन्ग वेटिंग पीरियड बिकॉज ही इज इनकरिंग प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली मुझे वो ध्यान देना चाहिए था, वरना फिर वो लास्ट के 2 लाइन का मतलब ही क्या है। तो देखो ना, he is not able to relieve in the earlier accounting period. Maybe he made loss in them as well, or has already accounted for this, has already accounted for the loss वगैरह, इसलिए वो भी पीछे लेके नहीं जा सकता। तो the only way forward मतलब the only way is the forward way, मतलब वो खाली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो क्या होगा? तो मतलब उसका 6 लाख पे बहुत सारा टैक्स सेव होगा। तो 72,000 इंटू 0.25, दैट इज हाउ मच टैक्स इज गोइंग टू सेव बेसिकली। तो बस वही बोल देंगे कि ये कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स हुआ है, लेकिन उसका कैश फ्लो अटका रहेगा और फ्यूचर में भी मतलब प्रॉफिट करेगा, उसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है, वो सब बता देंगे। तो हाँ, कैश फ्लो अटका रहेगा। और क्या है अभी देख लेते हैं इसमें, छोटा ही है इनका भी आंसर। द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिसीजन वुड बी दैट टैक्स रिलीफ वुड बी delayed और इवन लॉस्ट। उन्होंने बोला है ओके, राबो लिमिटेड हैज नो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड आल्सो हैज नो अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। सो देयर इज एक मिनट, so there is no possibility of taking either current period or carry back relief in Rabo Limited. Perfect. Following the change in ownership of the company, the loss can only be carried forward for the relief, providing there is no major change. So there is no major change, क्योंकि ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो हमें ये पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ओनरशिप चेंज हो रही है तो हमारा मेजर नेचर ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है ना। स्टार्टिंग no more than 3 years before the date of the change of ownership. Further information is required in relation to Nali's plan to make significant changes to the company's operations to ascertain whether or not this will apply to Rabo Limited. At best, this means that loss relief will be delayed. At worst, it may be even lost, या और जिसकी वजह से no relief can be obtained, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सी, अभी ये सी पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है वो लोग ने।
Explain with the help of supporting calculations the rollover and the capital allowances which may be claimed as a result of the planned capital acquisitions on 1st of June 2026. The total corporation tax relief or savings which these will give rise to in the year ending 31st of December 2026. ठीक है. Future plans and capital acquisitions nally is considering making significant changes. ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम पढ़ते तो हमें ऊपर का आंसर चेंज करना पड़ता थोड़ा सा कि भाई लॉसेस हो रहे हैं तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते करके. ठीक है ना, वो पॉइंट हमारा वैसे बदल जाता. अभी द फॉलोइंग एसेट्स विल बी एक्वायर्ड बाय राबो लिमिटेड. ठीक है, सेकंड हैंड वेयर हाउस कॉस्टिंग 3,12,000 इंक्लूडिंग 71,000 फॉर द लैंड. तो इसके ऊपर एसडीएलटी लगता है, लेकिन क्योंकि हम ये परचेज कर रहे हैं या जो भी, लेकिन इसके ऊपर 0 to 1,50,000 तो फिर 0% का एसडीएलटी आएगा. The seller had acquired the land in May 12. The warehouse had been constructed on it later that year. ठीक है. Additional 5 delivery vans costing 35,000. तो ये जो additional 5 delivery vans है, अ, मैं बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर हमें एआई मिलेगा एज अ कैपिटल अलाउंस. बट आई एम जेन्युइनली नॉट श्योर कि उसको एआई मिलेगा कि नहीं. ये गाड़ियां भी हैं, कार्स भी है, एआई नहीं मिलता. बट वैन्स है, आई थिंक वैन्स के ऊपर मिलना चाहिए. इसके ऊपर एआई मिलेगा. आई वुड गो विथ कि एआई मिलेगा 35,000 का. विल बी ब्रॉट इनटू इमीडिएट यूज. वो ठीक है, दैट्स फाइन कि इमीडिएट यूज के अंदर आ रही है. रोल अवे कैपिटल अलाउंसेस which may be claimed as a result of the planned acquisition. हाँ. Or rollover relief is usually claimed when a business asset has been sold, and with the same sale proceeds, new business assets have been acquired. So in the current scenario, we can see that the sale proceeds received by Rabo Limited were 3,95,000. Yeah, that's it. 3,95,000. और कुछ नहीं था उसके पास. बाकी सब नहीं है, मैटर नहीं करता. Now this 3,95,000 have been used to purchase second hand warehouse costing 3,12,000 and also delivery vans. However, delivery vans are actually movable chattels. ये एक सीन है भाई कि ये मूवेबल चैटल्स है, सो आई डोंट थिंक रोल ओवर रिलीफ इसके ऊपर मिल सकता है. ठीक है. Now, so therefore roll over relief is only eligible for the second hand warehouse of 3,12,000. ठीक है ना. So therefore now the remaining gains of कितना 3,12,000 minus है 83,000. 83,000 will be chargeable immediately. उतने गेन्स हुए थे क्या पहले? तो पहली बात तो हाँ, उतने गेन्स हुए थे. नाइस. तो 83,000 विल बी चार्जेबल immediately, and the rest of the 10,000 will be deferred. इसके ऊपर एआई तो मिलने ही वाला है, बराबर है. 35,000 तो वो भी एक डिडक्शन है. चलो नाइस. आई थिंक वी हैव सेड इनफ. कैलकुलेशंस ठीक है, उन्होंने पूछे हैं कैलकुलेशंस, बट आई थिंक मैंने इतना मतलब बता दिया तो ठीक है भाई. एंड सेकेंडली दे हैव सेड कि अभी अभी हमें बताना है कि भाई कॉर्पोरेशन टैक्स भी बताना है. कॉर्पोरेशन टैक्स सेविंग्स हमको बताना है which these will give rise to in the year ending. भाई साहब, कॉर्पोरेशन टैक्स सेविंग्स, क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो? 35,000 का एआईए एंड 10,000 मैं डिफर कर रहा हूँ, तो 45,000 के ऊपर 1125 का टैक्स सेविंग्स हो रहा है. और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा भाई, कि बाकी सब चार्जेबल ही लग रहा है मेरे को तो. चेक करते हैं. क्वालिफाइंग एसेट्स अकॉर्डिंग टू. ठीक है. फैक्ट्री कॉन्स्टिट्यूट सिंगल एसेट रोल ओवर. ठीक है. प्रोफिट नॉट इन्वेस्टेड 83,000. परफेक्ट. तो इसमें भी चार्जेबल गेन. नाइस. तो रुपए देखो, रोल ओवर हुआ 10,000 का और हमारे प्रोफिट चार्जेबल होंगे इन द करंट ईयर 83,000 के. डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर द रोल ओवर रिलीफ एज दे आर मूवेबल. नाइस. मूवेबल चार्ट मतलब वो उसमें आ गए वो चार्टर्स में. देन द वेयर हाउस was considered in 2012 and therefore is not eligible. बराबर है. इससे मैंने एसबीआई के बारे में भी आई डोंट नो मैंने बोला कि नहीं, बट मुझे पता था कि एसबीआई नहीं मिलेगा क्योंकि एसबीआई सिर्फ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पे मिलता है, इसके ऊपर नहीं मिलता. वैसे डिलीवरी वैन्स के वजह, डिलीवरी वैन्स पे पूरा का पूरा एआई मिलेगा. ओ ईच कॉस्टिंग है वो. ओ माय गॉड.
It was each costing 35,000. Oh my god. आई एम सो सॉरी भाई, मेरे को लगा 35,000 प्लस ये करके ईच कॉस्टिंग है, मतलब 35,000 इंटू 5 कितना होता है, 70 प्लस 70 प्लस ये तो होता है 100, हाँ तो आता है 70 प्लस 70, 140, 140 प्लस 35 इज 175, 175 प्लस 10,000, तो इट इज 1,85,000। तब जाके 26,250 का टैक्स सेव होता है। हाँ 26,250 का टैक्स सेव होता है। फक छोड़ यार।